Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and this is part 2 of the lecture Parliament. So far we have understood the different organs of Parliament and we have understood what exactly Parliament is. Today we are going to study the powers and the functions of Parliament. When we talk about the powers and functions of Parliament, you have to remember that there are basic functions of Parliament. First is known as the legislative function, second is known as the financial function, third is known as the electoral function. These are the three basic functions that Parliament has to perform: legislative, financial, and electoral. Okay, and when we talk about the power of the Parliament over here, power of the Parliament are basic again. First is the power of removal. Okay, the certain high functionaries, they can be removed from the office on the initiative of Parliament. Parliament can remove the president, judges of Supreme Court, high courts through impeachment for violation of constitution. Then the next power is power of amendment. Okay, most parts of the constitutions, they can be amended by Parliament by special majority. Okay, so basically you can say that Parliament can amend most parts of the constitution. And next power is known as the power over the executive. Parliament holds the powers over the executive, over the government. Parliament exercises control over the executive, and how, that we will study. Okay, so these are the three functions and three powers of Parliament. Please make this mind map so that you can easily revise it later on. Now, first power function of the Parliament, that is the legislative function. So Parliament, basically what can it do? Only Parliament can make laws on the subjects of union list. Okay, so यहाँ पर please write it down. Only Parliament can do that. Parliament can make laws on the subjects of union list. Secondly, along with the state legislatures, Parliament is also empowered to make laws on concurrent list. And if there are subjects which are not already mentioned in any list, either it is state, concurrent or union list, then the residuary powers are given to the Parliament to make laws on that particular subject. That is the legislative function. The next function is financial function. Now in this function it is said that Parliament is the custodian of public money. It is the handler and the protector of public money. So government can neither impose any tax on public nor can spend the money without approval of Parliament. That is the meaning of custodian of public money. गवर्नमेंट अपनी मर्जी से टैक्स भी इम्पोज नहीं कर सकता पब्लिक के ऊपर, और गवर्नमेंट अपनी मर्जी से बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के पैसे जो है खर्च नहीं कर सकता पब्लिक के. तो कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी कौन हुआ? पार्लियामेंट हुआ. एंड एज यू रिमेंबर, बजट इज ऑल्सो अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट एवरी ईयर. ये तो आपको पता ही है कि हर साल बजट पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड फंक्शन. वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट फंक्शन लेजिस्लेटिव, वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड फंक्शन, दैट इज फाइनेंशियल फंक्शन. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड फंक्शन, which is the electoral function. So in the electoral function you will study that Parliament participates in the election of President of India and also elects the Vice President. This is again important for prelims. And also remember another point. एक और point है यहाँ पर जो याद रखना है आपको, that over here remember it, Lok Sabha elects its speaker and deputy speaker. Okay, and Rajya Sabha, ठीक है, it elects its deputy chairman. यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना, लोकसभा अपना स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं और राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट करता है. ठीक है, पॉइंट क्लियर. सो दीज आर द थ्री बेसिक फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के ये तीन बेसिक फंक्शंस हैं. नाउ वी विल स्टडी द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट. Here is a small announcement before we move forward. आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है. अनअकैडमी लेकर आया है 3 months फ्री एक्सटेंशन, यानी कि अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा का अनअकैडमी प्लस का जीएस और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा 3 months का एडिशनल एक्सेसिबिलिटी अनअकैडमी बैचेस की फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो यानी कि 1 year 3 months का, अगर आप 1 साल का कोर्स ले रहे हो तो वो आपको पड़ेगा 1 साल 3 months का कोर्स. ठीक है, 3 months आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे एक्स्ट्रा. तो इसमें आप रिवीजन कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, कुछ क्लासेस मिस हुई हैं उन्हें कवर कर सकते हो. पर ये ऑफर ना लिमिटेड है, सिर्फ 30th November तक ही वैलिड है. एंड
इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज दैट अनअकैडमी आपको दे रहा है एक बहुत बड़ा डिस्काउंट। यानी कि अगर आप 1 साल 2 साल या 3 साल का अनअकैडमी प्लस का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो, यानी कि जीएस प्लस ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन, तो आपको 25% डिस्काउंट तो अनअकैडमी दे रहा है। ठीक है, ओल्ड प्राइस 77,000 था, न्यू प्राइस 55,000 पे आ रहा है। 25% डिस्काउंट ऑप्शनल के साथ 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हो अर्पिता 10। ठीक है, ये कोड यूज करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ARPITA10, कोई स्पेस नहीं है बीच में। एंड फ्लैट 2500 का डिस्काउंट अनअकैडमी प्लस ये एक्स्ट्रा दे रहा है आपको। तो यानी कि 1 साल की तैयारी आपको 55,000 रुपए में पड़ेगी। और आप जानते हैं इसके अंदर आपको प्रीलिम्स की भी तैयारी कराई जाएगी, मेंस की भी और आपके ऑप्शनल की भी, जहां पर 1.5 से 2 लाख कम से कम कहीं ना कहीं 3 लाख खर्च हो जाता है सिर्फ प्री और मेंस की तैयारी करने में, और अलग से ऑप्शनल के बैचेस लेने पड़ते हैं। वही अनअकैडमी प्लस पे सिर्फ 55,000 रुपीज में आपकी पूरी यूपीएससी की तैयारी हो रही है। तो आप आज की आज सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी प्लस में, क्योंकि सिर्फ 3 दिन बचे हैं इस ऑफर की। 30 नवंबर को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। और हमने लॉन्च किए हैं नए नवंबर ऑप्शनल कोर्सेज, जैसे कि सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, पॉल साइंस एंड आईआर, पबैड, जियोमॉर्फोलॉजी, और नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं 1 दिसंबर से प्री और मेंस के 2022 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए। और ये बैचेस आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस के हिसाब से होंगे। अगर आप इंग्लिश में लेना चाहते हो, बैचेस इंग्लिश में भी हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो सेपरेटली हिंदी मीडियम बैचेस भी हैं। बेस्ट पार्ट तो ये है कि अब आपको 20 जीएस बुक्स का सेट भी आपके घर तक डिलीवर किया जाएगा जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, जिसके अंदर आपका पूरा यूपीएससी का प्री मेंस का सिलेबस कवर्ड होगा। और ये बुक्स भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और आपके घर तक आपको पहुंचाई जाएंगी। इन किताबों को रिव्यू किया है अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स और प्रीवियस ईयर यूपीएससी टॉपर्स ने। तो सारा पैकेज एक ही जगह सिर्फ 55,000 में अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो आपको मिल जाएगा। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, फटाफट से आज सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कल होने वाला है ऑल इंडिया फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी प्लस की तरफ से, जहां पर टॉप 1000 पार्टिसिपेंट्स को मिलेंगे आईपैड मिनी, सैमसंग टैब, फिटबिट वर्सा एंड अमेजॉन वाउचर्स जैसे रिवॉर्ड्स। और जो लोग टॉप 1 से टॉप 3000 तक की रैंक में आएंगे उनको 6 करोड़ प्लस की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अगर आप रैंक 1 से रैंक 3 के स्टूडेंट हो, यानी कि कल के स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको रैंक 1 से रैंक 3 आती है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 100% स्कॉलरशिप। ठीक है, और 75% स्कॉलरशिप रैंक 4 to 10 को। ऐसे ही आप देखोगे अप टिल 15% स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है अनअकैडमी कॉम्बैट का, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आपसे इनवाइट कोड पूछा जाए तो अर्पिता 10 यूज कीजिए और इस पर्टिकुलर टेस्ट में इनरोल कीजिए। कल सुबह 11 बजे लाइव टेस्ट आपको देना है, 28 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, 56 क्वेश्चन ही हैं, 60 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। Now there are 3 basic powers of the parliament. First is known as the power of removal. So parliament can remove certain high functionaries, okay, and it can remove the president, it can remove the judges of Supreme Court, High Court through impeachment. That is violation of constitution. Second important power that a parliament exercises is that it can amend most parts of the constitution through special majority, and certain provisions can be amended by the approval of states also. Now, but the another important pointer that you have to remember is the basic structure of constitution cannot be changed by parliament. ऐसा कोई amendment नहीं कर सकता parliament जिससे कि संविधान का जो basic structure है वो change हो जाए, वो वैसा ही रहेगा। ठीक है? Now, power over executive, the third power. So it exercises control of executive through question hour, 0 hour, calling attention notice, adjournment motion, etc. And the government takes all these motions very seriously because government की जो policies होती है उनको बहुत फिर heavily criticize किया जाता है अगर वो इन motions को seriously ना ले। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट को अपनी इमेज और अपने पॉलिसीज की वैलिडिटी बनाने के लिए इन मोशंस को सीरियसली लेना पड़ता है। सो दैट वे इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय पार्लियामेंट। ऑलराइट, वी विल स्टडी ऑल दीज मोशंस, डोंट वरी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग द एंटायर डे। पूरे दिन पार्लियामेंट में होता क्या है ये समझ लेते हैं, ठीक है, एक एक करके, देन वील स्टडी इट इंडिविजुअली। So 11 a.m. the parliament session starts, and from 11 a.m. till 12 p.m. that is till 12 noon we have the question hour session, wherein generally it is reserved for asking and answering of questions, and ministers are obliged to answer those questions. Okay, that is the question hour.
Then from 12 p.m. to 1 p.m. it is known as the 0 hour because it starts at around 12 noon, hence the name is 0 hour. And the members can, with prior notice to the speaker, raise issues of importance during this time. So you have to remember, when the members raise issues regarding the governance during this period, they have to give prior notice of the same topics to the speaker. ठीक है, if they have not given the prior notice then they cannot raise those topics, okay, because it will end up wasting 1 hour, right? अगर notice दिया और कोई भी ऐसा vague topic हुआ तो waste हो जाएगा time. Then from 12 p.m. 1 p.m. to 2 p.m. it's the lunch time, okay, break time हो जाता है. Then starts the major functioning of Parliament from 2 p.m. till 6 p.m. So 2 p.m. till 5 p.m. is reserved for Rajya Sabha, okay, and 2 p.m. till 6 p.m. is reserved for Lok Sabha. तो 2 से 5 बजे तक तो राज्य सभा का चलता है और 2 से 6 बजे तक लोक सभा का चलता है, ये पॉइंट याद रखिएगा. And this period 2 to 6 p.m. is reserved for making laws and passing budgets. All right. So this is the basic functioning of parliament. Basic होता क्या है पार्लियामेंट में पूरा दिन, ये आपका उसका एक माइंड मैप है. So you can just draw this table in your registers. Okay, आप अपने रजिस्टर में फटाफट से इस टेबल को बना लीजिए और you can take a screenshot also. It's important. Now let's talk about the question hour. Remember that the first hour of every parliamentary sitting is slotted for the question hour only. Okay, but there is an exception. In 2014 the question hour was shifted in Rajya Sabha from 11 a.m. to 12 noon. ये पॉइंट याद रखना है आपको. जो पहला आवर होता है ना, हमेशा याद रखना, जब भी शुरू होगा पार्लियामेंट्री सिटिंग तो वो क्वेश्चन आवर के लिए रिजर्व्ड होगा. बट 2014 में क्या हुआ था, 11 बजे के बजाय 12 बजे शिफ्ट कर दिया था क्वेश्चन आवर को. ठीक है, इन 2014 इंस्टेड ऑफ 11 am क्वेश्चन आवर वाज कंडक्टेड फ्रॉम 12 pm. दैट इंस्टेंट जस्ट हैपेंड वंस. ओके, एक ही बार हुआ था. नाउ द क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड हियर बाय प्राइवेट मेंबर्स. प्राइवेट मेंबर्स भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इस पॉइंट को आप लिख लीजिए. प्राइवेट मेंबर्स कैन आल्सो आस्क क्वेश्चंस. ओके, ऐसा नहीं है सिर्फ मेंबर ऑफ द हाउस, प्राइवेट मेंबर्स भी कर सकते हैं. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स एंड दे होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ देयर मिनिस्ट्रीज, एंड क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड टू द प्राइवेट मेंबर्स. ये पॉइंट याद रखना है. प्राइवेट मेंबर्स आर एमपीज हु आर नॉट मिनिस्टर्स. ऑलराइट. Then it is regulated by parliamentary rules. Question hour को कैसे regulate किया जाता है? Write it down. It is regulated by parliamentary rules. PR. Okay. The presiding officers of both houses, that is in Rajya Sabha and Lok Sabha, they are the final authority. Another important point. ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा. The presiding officers, both Lok Sabha and Rajya Sabha में, they are the final authority. They are the final speaker, chairman जो होंगे वो final authority होंगे with respect to conduct of question hour. Okay, and there are 3 kind of questions that can be asked. 3 तरीके के questions होते हैं जो पूछे जा सकते हैं. First is known as the starred questions. Starred मतलब इस तरीके का जो star होता है ना, the starred questions. Okay, now this requires an oral answer, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं starred. तो इसके अंदर ना आपको आंसर ओरल ही देना पड़ेगा, मुंह से ही आंसर देना पड़ेगा, ओरल आंसर. Hence supplementary questions can also follow. If one question is asked, supplementary question can be followed. ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, supplementary questions can be asked. Alright, ये तो हो गया first type of question. Second type of question is the unstarred question. Second question हो जाता है unstarred question. This question requires a written answer. पहले वाले में स्टार्ट वाले में ओरल आंसर रिक्वायर्ड था, इसमें रिटर्न आंसर चाहिए. तो हियर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट बी फॉलोड. यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते. एंड द थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन इज नोन एज, राइट इट डाउन, द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. Okay, now it is asked by giving a notice of less than 10 days. इसमें ना कम 10 दिन से कम का नोटिस दिया हो तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एंड इट इज आंसर्ड ओरली. इसको भी अगेन ओरली ही आंसर किया जाता है. एंड क्वेश्चन आवर इन बोथ हाउसेस इज हेल्ड ऑन ऑल डेज ऑफ द सेशन. But there are 2 days when exception is made. What are those 2 days when question hour is not conducted? When President addresses the MPs from both the houses and on the day the budget is announced by Finance Minister.
ओके ये जो 2 दिन होता है ना, पहला जब प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहा होता है एमपीज को, या दूसरा जब बजट प्रेजेंट किया जा रहा होता है, उन 2 दिन क्वेश्चन आवर को स्किप कर देते हैं, ठीक है, सो दैट द एंटायर सेशन कैन बी डेडिकेटेड टू दीज 2 पर्पसेस. All right. Now the next one is 0R. अब आता है 0R के बारे में. So it is an Indian parliamentary innovation. Why it is said so? Because it is, write it down, not mentioned in parliamentary rule books. Parliamentary rule books के अंदर 0R के बारे में कुछ भी mentioned नहीं है, इसलिए इसको innovation माना जाता है. Under this, MPs can raise matters without, write it down, MPs can raise any issue or they can raise any matter without prior notice. Without prior notice, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिना नोटिस के इसमें कोई भी मैटर रेज किया जा सकता है. सो इट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर एंड इट लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर द डे और द रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस इज टेकन अप, एंड द टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा इज नोन एज 0R. एजेंडा इज दिस वन, ये होता है अपने पार्लियामेंट का एजेंडा जो मेन बिजनेस होता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके बीच का जो टाइम है वो 0R को दिया जाता है, कभी कभी लंच टाइम भी ले लेता है 0R, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा. सो दीज आर द बेसिक आर्स, क्वेश्चन आर एंड द 0R. आई होप नाउ यू अंडरस्टूड क्लियरली, अच्छे से समझ आ गया ना. कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑलराइट, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मोशन एंड दैट इज द, राइट इट डाउन, एडजर्नमेंट मोशन. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मोशन है एडजर्नमेंट मोशन, जो हमें समझना जरूरी है, ठीक है. सो एडजर्नमेंट मोशन इज इंट्रोड्यूस्ड वेयर, राइट इट डाउन. It is not introduced in Rajya Sabha. It is introduced only in लोक सभा. सिर्फ लोक सभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है. Why? To draw the attention of लोक सभा to a important matter which has urgent public importance. कोई ऐसा मैटर जिसमें बहुत ज्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंस अटैच्ड है, अर्जेंट उसे अटेंशन की जरूरत है, उस मैटर को हम इस मोशन के द्वारा इंट्रोड्यूस करते हैं. एंड द डिस्कशन ऑन दिस मोशन शुड नॉट लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes, यानी कि मैक्सिमम 2 hours 30 minutes तक ही आप इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. And here you have to raise matter which is definite, which is factual and which is urgent and it is of public importance. ओके और एक से ज्यादा मैटर एक एडजर्नमेंट मोशन में कवर नहीं होगा, ये पॉइंट याद रखिएगा. एंड नॉट दिस एडजर्नमेंट मोशन कैन नॉट बी रेज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज. ओनली पब्लिक इंपॉर्टेंस रिलेटेड मैटर कैन बी आस्क्ड. ऑलराइट, एंड इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स. अगर इसको एडमिट कर लिया जाता है तो कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए इस मोशन को आगे बढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए. सो इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस ऑफ द हाउस दैट यू हैव टू रिमेंबर. Alright, so this was all about part 2 of Parliament. I hope you enjoyed this lecture. Abhi we will study different kinds of motions, privilege motion, censure motion, call attention motion. Then we will study no day yet named motion, no confidence motion, motion of thanks, cut motion. Okay, all these motions we have to study, so that we will study in part 3 of this lecture. Alright, on this note we are wrapping up the class. Thank you and have a beautiful day ahead everyone.